If you think that you want to live a great life, I'm sure everyone wants to have a great life. But when it comes to great life today, all the guys think about abs and biceps and triceps. And when it comes to living a great life today, all the girls think of size 0. When it comes to a great life today, all the girls think about money. And when it comes to Marwadis, I'm from a Marwadi family. They don't need much to make money. They don't need to go to college to make money. A Marwadi and a Chinese both were sitting in a local train and going in a local train, and a mosquito sat on the Chinese guy's head. He picked it up and he ate it. Then a mosquito sat on a Marwadi fellow's head. He picked it up and turned to the Chinese guy and said, "Kharidega kya?" That guy will make business out of mosquitoes, you know. So loads of people think that in order to have money you need to look good. That's the modern paradigm. Biceps, triceps, size 0, you need to look good. People think in order to live a great life you need to have good, which is basically you have a lot of money, and then with all that money you can buy so much stuff, upgrade your home from a smaller one to a bigger one. If you're riding a bicycle, you get a bike. If you're riding a bike, you get a car. If you're riding a car, you get a better car. If you're riding in a bus, you start traveling by train. If you're traveling by train, you start traveling by plane. People are thinking that you live a great life by upgrading the quality of your lifestyle. There is a big difference between a lifestyle and a life. Your looks is your lifestyle. The money you earn will get you a great lifestyle. And it's good. I'm not saying we shouldn't have money. Money is going to get you a great lifestyle. A better house, a better car, a better income, better gadgets. All of these things will come as a matter of lifestyle. But there's a great difference in living a great lifestyle and a great life. What we are talking about here today is living a great life. Well, how many of you are born? How many of you are born? कितने लोगों का जन्म हुआ है यहाँ? I'm sorry about that question. It's a very paradoxical, rhetorical kind of question. But I think I have always defined life as a segment called BD, in which B stands for birth. And to be very honest, yeah, sure, please. Yeah. To be very honest, birth is not in our control, isn't it? आप में से कितने लोगों ने अपने माता पिता को चुना है? ये हाथ क्या उठा रहा है? कोई चुन के आया है? बिंदास हाथ उठा रहा है साला। बोले ये मेरी मम्मी होगी, ये मेरे पापा होगा, फिर मैं अवतार लूंगा इनके घर में। What are we talking about? None of us have chosen our parents. How many of you chose your looks? मेरा नाक ऐसा होगा, मेरी आंख ऐसी होगी. We never chose our looks either. They say that no one looks as good as their Facebook profile picture. No one. No one looks as good as their Facebook profile picture, and no one looks as horrible as their Aadhaar card picture. God, there's such a contrast, you know. Such a contrast. Facebook में एकदम style में और Aadhaar में wanted. I'll tell you, it's completely out of our control. The birth is out of our control. And the D, which stands for death, even that's out of our control. एक चीज बोलूं, कितना भी जीवन में समस्या आ जाए ना, कभी भी आत्महत्या का विचार मत करना. कुछ भी हो जाए, दिल टूट जाए, दूसरा आ जाएगा. फेल हो जाओ, यूनिवर्सिटी दयालु है चांस देने के लिए. घर में कहीं भी समस्याएं आ जाए, let death come by its natural course, which is not in our control either. The birth's not in our control and the death's not in our control, and we will die for certain. इसमें कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं है. One lady and her nephew, the lady was 65 and the nephew was like 30, 28, 25, 28. Whenever there was a wedding in the family, जब भी शादी होती थी ना, बुआ
और उनका जो नेफ्यू है वो दोनों साथ साथ में खड़े रहते थे. एंड देन द लेडी वुड नज नेफ्यू, अगला तेरा नंबर है. और नौजवान लड़कों को लड़कियों को शादी करना ने बोले दे डोंट लाइक इट, अगला तेरा नंबर है. सो ही वुड एवरी टाइम देयर वाज अ मैरिज शी वुड डू दिस, अगला तेरा नंबर है. एंड देन देयर वाज अ डेथ इन द फैमिली एंड बोथ वेंट फॉर द फ्यूनरल. और दोनों साथ साथ में खड़े थे. दिस टाइम नेफ्यू सेड अगला आपका नंबर है. I'll tell you, अगला किसका नंबर आएगा कौन जाने. लेकिन हम उसके बारे में सोच ही क्यों रहे हैं? Why should we think about birth, which is not in our control? Why should we think about our looks, which is not in our control? Why should we think about how death, which is not in our control? What is in our control is between these letters B and D is a letter called C, which stands for choice. It is this usage of choice that makes a great life. It is the usage of this C, choice, that makes a great man or a woman. Every great person, no one was born great in the maternity ward. सचिन तेंदुलकर मां के गर्भ से छक्का लगा के नहीं आया. अरिजीत सिंह मां के गर्भ से तुम ही हो करके नहीं आया. No one was born great. Everyone has the potential to be great. Every single person sitting in this auditorium has the potential to be great and to lead a great life. But that potential has to be utilized. That potential has to be realized. And in order to realize that potential, we have to make the right choices. That choice is completely in our control. Your looks are not in your control. The socio-economic class you are born into is not in your control. The way we die is not in our control. Demonetization around is not in our control. So many things happen in the world which are not in our control. But how we make our choices is completely within our control. Ladies and gentlemen, therefore, I say, being a male is a matter of birth. Being a man is a matter of age. But being a gentleman is a matter of choice. And as a corollary to that, being a female is a matter of birth. Being a woman is a matter of age. But being a gentlewoman or a lady is a matter of choice. Choose. You have to learn to choose. And if you don't choose, नहीं सब लोग सोच रहे चूज whom, him or her. मैंने जैसे चूज बोला सब लोग देख रहे किसको करूं. Oh goodness, सब क्या बच्चे भी आजकल के, क्या बोलूं मैं. हम लोग कॉलेज में थे तो ऐसा सोचते ही नहीं थे. सोचते थे अंदर अंदर. बाद में क्या का क्या हो गया आप देख ही रहे हैं. When Swami Vivekananda, he was in London and he was dressed up in like robes of a Swami, and one British man, English man, came and said, "Hey, why don't you dress up like a gentleman?" And Swami Vivekananda gave a great answer. He said, "In your country, a tailor makes a gentleman. In our country, character makes a gentleman." Our dress doesn't make a gentleman. It's the choices we make that makes a gentleman. Ladies and gentlemen, this morning I would like to discuss with you a couple of mantras for success, a couple of sutras for success, where you will have to make that choice. And believe me, you hand on my heart, I can tell you, rest assured, if you just do what I'm saying, all the potential you have in you will be unfolded. Otherwise, you'll remain a mediocre student. You'll remain a mediocre student
You'll remain a mediocre doing a 9 to 6 job, earning a few bucks. That is all you will be for the rest of your life because you didn't follow what I'm trying to propose to you today. Give me all your ears and listen to what I have to say attentively. And if you try and change and apply even a little bit of what I'm saying today, I can assure you, greatness will not just remain a dream for you. Greatness will become a reality for you in your life. You won't rot in a mediocre life. You will live a great life. Okay. Everyone wants those secrets and, to know what those mantras are. How many of you went to school? I'm sorry. If you're in college, obviously you went to school. और वो स्कूल में ना, क्या वो एक स्पेलिंग सही आना कितना मुश्किल था. कितने लोगों को स्पेलिंग में बहुत मुश्किल होता था बचपन में? कितने लोगों को आज भी मुश्किल जाता है? मतलब ठीक है, जाता है तो जाता है. स्पेलिंग डजंट डिफाइन यू. योर पर्सनैलिटी डिफाइंड यू, नॉट स्पेलिंग. गलत हो गया स्पेलिंग, उसमें आइडिया ग्रेट है, गलत स्पेलिंग से तो फर्क क्या पड़ता है? People who have great ideas don't necessarily know all the spellings right. And just because someone knows all the spelling right doesn't mean he has great ideas. One teacher in school asked a guy, स्कूल में बच्चों को पूछा, एक बच्चे को पूछा, which state of India are you from? बच्चा बोला, महाराष्ट्र मैडम. बोला, can you spell it for me? He said, no, I'm from Goa actually. महाराष्ट्र का स्पेलिंग कौन बोलेगा, इतना बड़ा मेरे को आता नहीं. To get those spellings right was such a task. It was success for you. In school, what was success? Getting the spellings right, getting your math right, getting your pronunciations right. One teacher called a man and said, आपके बच्चे को last 1 week I'm teaching your child how to pronounce the word electricity. He keeps saying electricity. The father said, what can the poor fellow do? That's his capacity. I must tell you, स्कूल में ना एक प्रोनाउंसिएशन सही आ गया, स्पेलिंग सही आ गया, टीचर का और झापड़ नहीं खाया, मैं ग्रेट हूं. I'm successful. And then of course you come to college. And in college what matters to you is a degree, your BMS, your MMS, your Be calm. Your Be completely calm, be calm. I'll tell you, you all want professional degrees. And when you get those professional degrees, you know that your future will obviously be bright. उसमें भी पढ़ाई नहीं करते लुखे. मतलब आज के नौजवान इतने लुखे हैं कि पढ़ाई करो, अभी टाइम पास करने का एज नहीं है. सबको लगता है अभी टाइम पास नहीं करेंगे तो कब करेंगे, लेकिन अभी टाइम पास करेंगे तो भविष्य कुछ नहीं होगा. Right now is the time of focus. Right now is the time of concentration. Right now is the time of dedicated commitment to your academic courses. Because if you don't give it now, when will you give it? It's just going to be too late. And then your future is going to be jeopardized. भविष्य में क्या होगा आपके पास? Mediocrity. Mediocrity. ऐसे ही मीडियोकर बन के रह जाओगे. मैं आपको बोलूं क्या? आप सबको देख के मुझे लगता है कि आप सबके बीच में एक एक हनुमान बैठा है. सबके अंदर एक एक हनुमान बैठा. क्यों बोल रहा हूं मालूम? Hanuman was meant to cross the ocean to go and find Sita. But he didn't know what his power was. Every monkey was saying, we'll jump this much, jump this much. He was quiet. Then there was a personality called Jambavan who came and reminded Hanuman, you have the potential to cross this ocean. And only when he was reminded and empowered could Hanuman cross the ocean and find Sita. आप सबके अंदर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है. मैं जैसे आपके चेहरों को देख रहा हूं ना, आपकी आंखों में एक चमक दिखती है मुझे. और उस आंखों की चमक में मैं देख सकता हूं कि आपके भीतर भी एक बहुत महान व्यक्ति बैठा है. लेकिन अगर अभी मेहनत नहीं करोगे, अगर अभी समर्पण नहीं करोगे, तो कब करोगे? This is the time. This is the age.
This is the era. Not to get distracted. Not to get carried away by all those temptations. This is the time to give not your 100, your 200% to what you're doing. And then excel accordingly. नहीं तो पढ़ाई करते नहीं लुखे और फेल हो जाते हैं बेशरम. वो एक लड़का लुखा ही था, वो भी अपने फादर के साथ चल के जा रहा है, तो उसके फ्रेंड का मैसेज आया कि अरे आज अपना रिजल्ट आने वाला है. तो उसने मैसेज किया वापस, भाई मेरे अपने पापा के साथ चल रहा हूं, पापा कभी भी फोन ले लेते हैं, मैसेज वैसेज चेक करते हैं मेरा, तो अगर फेल हो गया ना मैं तो कोड लैंग्वेज में बताना भाई, नहीं तो पापा को पता लग गया तो रास्ते पे ही आग निकलेगा कान के नीचे. तो तू एक कर, अगर एक में फेल हो गया ना बोल देना गुड मॉर्निंग टू यू, मैं समझ जाऊंगा. 2 में फेल हो गया ना बोल देना गुड मॉर्निंग टू यू एंड डैड. 5 मिनट में मैसेज आया गुड मॉर्निंग टू यू डैड फैमिली एंड फ्रेंड्स. सब में फेल हो गया वो. हरे राम राम. आई विल टेल यू, एट दिस स्टेज इन योर लाइफ सक्सेस मीन्स achievement of a degree, right? How many of you are looking forward to your convocation ceremony when you get the degree in your hand? How many of you are looking forward to probably pursuing a post-graduation course if you're a graduate and then getting a good degree in your hand? Of course, all of you. And what is that meant for? That is meant for a job, right? A job, a business. कुछ करके दिखाएंगे. स्वामी जी आपका लेक्चर व्यर्थ नहीं जाने देंगे, है ना? जाने देंगे व्यर्थ? आपका लेक्चर व्यर्थ नहीं जाने देंगे, कुछ तो करके दिखाएंगे. There was a guy in America. He went to Microsoft for a job interview. What was the job interview for? झाड़ू वाला. झाड़ू वाले के लिए इंटरव्यू के लिए गया. So इंटरव्यू में पास हो गया. तो the HR man said, okay, we'll send you your employment letter for the post of a janitor, a jhadu wala. Give me your email ID. He said, well, I don't have an email ID. He said, idiot. You come to Microsoft to apply for a job and you don't have an email ID? So you're not selected, get out. बेचारा निकला बाहर, बोला यार email ID नहीं, job नहीं मिला. He had $5 in his pocket. He went around and purchased a crate of tomatoes. And went and sold that crate of tomatoes for $10. $5 he made in one day. He said, not bad, I can make money. He started his business and grew to be the greatest retailer of tomatoes in the whole United States of America. Then he decided to get an insurance done. So he called the insurance people. So the insurance people said, yeah, all the papers are ready. Give us your email ID, we'll email it to you. He said, I don't have an email ID. Said, sir, you don't have an email ID, you're such a wealthy big businessman. If you would have had an email ID, what would you be? He said, a jadu wala at Microsoft. You know. अगर ईमेल आईडी होता था ना, एक झाड़ू वाला बन जाता था माइक्रोसॉफ्ट में. ईमेल आईडी नहीं था, इसलिए आज बड़ा बिजनेसमैन बन गया. I'll tell you, we all want that job. And what is that job meant for? How many of you want money here? Be honest. How many of you want a lot of money? अरे साधुओं के सामने हाथ उठाने से इच्छा सच हो जाती है. हाथ उठा लो अभी. Oh God. We all want a lot of money. और मारवाड़ी लड़की होगी तो पैसा कैसा कमाती हो मालूम है? कैसा कमाएगी वो पैसा? One teacher in a class was asking all the students, tell me, what do you want to be when you grow up? So one guy whose name was Varun, उठा बोला, I want to be the richest man in the world, have 20 big bungalows, 5 fancy most expensive cars, I want a private chartered plane and hundreds of servants under me. So then the teacher said, look, I asked you what you want to be. You can't say this in so many sentences. Answer only in one sentence, okay? Now whoever I ask has to answer in one sentence. So he said, Pooja, what do you want to be? She said, Varun's wife. Varun's wife. वो सब कमाने दे उसको, मैं मारवाड़ी हूं, मैं उससे शादी कर लेती हूं. सब मेरा होगा. अरे भाई पैसा
When you were a kid, pronunciation was success to you. When you were a college student, degree was success to you. When you came to take a job, promotion meant success to you. At all stages, money meant success to you. And then, of course, इतना सब किस लिए? इतना सब किस लिए किया? पैसे का क्या अचार डालेंगे? जब तक कोई नहीं हो. एक लड़का आया और पंडित जी को बोलता है, ज्योतिषी को, स्वामी जी मेरा कुंडली देखिए प्लीज, शादी ही नहीं हो रहा है. पंडित जी बोले, कैसे होगा पगले, तेरे कुंडली में सुख ही सुख लिखा है. Oh my God. I'll tell you. The fact of the matter is this, that at all stages, success meant different things to you. Childhood, something was success. When you're looking for a marriage, you wanted a perfect guy or a girl which never exists as a success. You think that is success. What is real success? Is achievement success? In school, if you get your pronunciations right, is that success? If you get a great job, is that success? If you get a lot of money from that job, is that success? If you could upgrade the quality of your car or your house, is that success? If you got that dream girl or the dream guy whom you are after, is that success? Can you imagine? At all stages in our life, success means achievement to us. I do not think so. I completely disagree with the definition that the modern world is feeding you with, that success means achievement. Sorry. Achievement is a byproduct of success. That is not success. वो आएगा. Achievements, पैसा, जो भी आप चाहते हो, सब आएगा. पर उसको यश नहीं कहते. What is success? Are you all ready? You all with me now? Yes. Right. Good. Thank you. There was once a man, he was watching a football match. And he had a little boy, like about 4 years old. And the boy was like nagging the dad, talking to him constantly during the match. And the father was like frustrated. Then the father realized, if I don't keep this guy busy, he's going to be messing up my football match. So the father saw there was a newspaper. Or rather, there was a jigsaw puzzle in the house. It was the puzzle of the entire map of the globe, the world. And he told the boy, come on. Now he put all the pieces here and there. Said, assemble the map of the world together, which would take for a 4-year-old, would take at least an hour. The boy did it in a jiffy. Jiffy. ऐसा कर दिया. Within just a couple of minutes, the boy had put it all together. And the father was like completely astonished. He said to the son, I mean, how did you do it so quick? The son said, very simple, Dad. Behind the jigsaw puzzle of the world, on the other side, was the picture of a man. I put the man together and I got the world together. Ladies and gentlemen, if you cannot put the man together, you cannot put the world together. जब तक आप अपने आप पर काबू नहीं पा लेते ना, न तो आपके एकेडमिक्स पर काबू पा पाओगे, न तो अपने वर्क पर काबू कर पाओगे, न तो किसी लोगों के साथ कनेक्ट कर पाओगे. अपने आप पर काम करो. महानता का लक्षण यह नहीं कि दुनिया पर कंट्रोल करो. महानता का लक्षण यह है कि अपने आप पर काम करो. द मोर यू वर्क ऑन यू, यू आर पेविंग द वे फॉर ग्रेटनेस. Therefore, another little boy, he went to a balloon seller. And there were like varieties of colored balloons there. And he asked the balloon seller, बच्चे तो कुछ भी सवाल पूछते हैं. बच्चे है ना, दिल के सच्चे हैं. हम लोग दिल के सच्चे नहीं रहे, इसलिए सोफिस्टिकेटेड तरीके से पूछते हैं हर सवाल. बच्चों को तो आप जानते हैं बच्चे कैसे सवाल पूछते हैं. Something, yeah.
थैंक्स, थैंक यू। एक बच्ची गई, छोटी बच्ची, और एक दुकानदार से पूछती है, 4 साल की बच्ची, अंकल अंकल मैं कैसी लगती हूं? 4 साल की बच्ची। दुकानदार बोला, बड़ी प्यारी लगती हो बेटिया, बहुत प्यारी। अच्छा तो अंकल फिर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरी शादी आप आपके बेटे से करेंगे? तो दुकानदार बोला, जरूर करूंगा बिटिया, तुम्हारी शादी मेरे बेटे से करूंगा। तो अंकल अंकल फिर अपने होने वालों को, एक बहू को एक फ्री 5 स्टार नहीं देंगे आप? बच्चे, little kids, right? Little kids. So this little boy comes up to the balloon seller and says, uncle, will the red balloon fly in the air? The balloon seller said, sure. And what about the blue one, uncle? Said, definitely, darling, it will fly in the... And what about the yellow one? The balloon seller, now he was getting exasperated. He said, yes, even the yellow balloon. And the purple? Then the balloon seller turned towards the little boy and said, darling, it's not the color of the balloon that makes it go up. It is what is filled inside the balloon that it takes it up. You know? It's not the color of your skin. It's not the color of your clothes. It's not the phone that you use, the watch that you wear, or the polished English that you speak. गुजराती लोग इंग्लिश बोलते तो कैसे? इंडियन इंग्लिश, अरे राम राम राम। भारतीय लोग इंग्लिश बोलेंगे ना, वो एक मेरे को बोलता है, विल यू टेक हॉट हॉट चपातीस? मैं बोला, हॉट हॉट, व्हाट डू यू मीन हॉट हॉट? हम लोग क्या है ना, जैसे हिंदी में हो तो इसको एग्जैक्ट ट्रांसलेट करते हैं, गरम गरम चपाती, हॉट हॉट चपातीस। There's nothing like hot hot in English. And one guy comes up to me and says, morning only I go for jogging. Morning? हम लोग बोलते हैं सुबह सुबह ही जॉगिंग के लिए जाता हूं. So he's translating it literally. Morning only I go to jog. एक टीचर ने बच्चे से पूछा, ट्रांसलेट दिस हिंदी इनटू इंग्लिश. हिंदी में था शाइनिंग, हिंदी में लिखा बोला था, चमकते हैं तारे आसमान में कैसे कैसे. उसने ट्रांसलेट किया, ट्विंकलिंग आर द स्टार इन द स्काई हाउ हाउ. लिटरल ट्रांसलेशन करता है. So all your personality, your charisma, your gadgets, your looks, your style is the color of the balloon. That doesn't take you great in life. That doesn't take you high in life. What takes you high in your life is what is filled inside your attitude. Ladies and gentlemen, greatness is not about achievement or aptitude. Greatness is about attitude. If you have the right attitude, achievements will be a by-product. If you even have achievement and you don't have a great attitude, I think you will be a great failure. I've always said this. This is called the iceberg illusion. You know, people will always see that one top, जो पानी के ऊपर होता है ना, वही दिखता है उनको. What people see, success. It's a very small part. But what they don't see, which is underneath the surface, is a lot of persistence, is a lot of hard work, is a lot of dedication, is a lot of discipline, lot of failure, lot of commitment. वो सब तो दिखता नहीं है ना. सचिन तेंदुलकर को छक्के चौके मारते हुए देखते हैं, घंटों घंटों रगड़ता है, मरता है वो पिच पे, वो तो दिखता नहीं है ना किसी को. सारे बॉलीवुड स्टार्स को आप उधर देखते हैं, दंगल में से एक पेट का एक कम हो गया. Huge belly, pot belly. Amir Khan had a big pot belly and he brought it down to 6-pack and 8-pack abs within a month. वो जिम में जाके रगड़ रहा है, डाइट कंट्रोल कर रहा है, वो अंडरनीथ जो है वो तो किसी को दिखा नहीं. स्क्रीन पे बस दिखा तो आपको को भी लगता है खा लेता है, पेट आ जाएगा, फिर अपन 1 महीने में कम कर देगा. अच्छा, how can you, people when they come and ask me, sir, can you teach us public speaking? You seem to be so confident. You seem to be so walk on, start. What, you know, it's not like, I don't have to look at things, just start and speak. Can you teach us public speaking? You can see what today's talk is on the top of the iceberg. Underneath that surface, 21 years of speaking, failing, trying, and not giving up has gone on. You know, can you imagine? Once I did a talk in someone's house. किसी के घर पर गया था,
तो एक आदमी आया, बोला स्वामी जी मैं आपका फैन हूं। मैं बोला बजाज की उषा? बोलता है मैं आपका फैन हूं। मैंने कहा अच्छा, नहीं मेरे को आपके लेक्चर बहुत पसंद है स्वामी जी। बोला अच्छा थैंक यू। बोला आपके जोक्स बहुत पसंद है, कि मस्त जोक बोलते हैं, मजा आता है क्लास सुनने में, आपका लेक्चर सुनने में। सो देन अ लिटिल बॉय केम रनिंग। आई सेड बेटा है आपका ना? बोला हाँ हाँ बेटा है। कौन सा, क्या नाम है बेटा? बोला आर्यन। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में। एंड देन अ लेडी केम। आई सेड बेटी है ना आपकी? शी वॉज लाइक ऑल स्माइल्स, बट द गाय वॉज ब्लू बिकॉज इट वॉज हिज वाइफ। तो मैंने बोला बेटी है ना? तो वो तो इतनी खुश हो गई सुन के कि पत्नी है लेकिन बेटी की उम्र की दिखती हूं, और उसको लगा मुझे बुढ़ा बोल रहा है करके, बाप में मेरे बाप पत्नी का बाप। सो इन 2 minutes ही वॉज लाइक ब्लू, बट देन ही टर्न टू हिज वाइफ एंड बोल प्रभु जी को ज्यादा सीरियसली मत लेना, जोक मारते रहते हैं वो। सो आई फेल्ड सो मेनी टाइम्स। जो आपको दिखा नहीं, आज मैं आपको बता रहा हूं इसलिए मालूम पड़ा कि मेरे से गलती हुई है। अगर नहीं बोलूं तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, उनको केवल एक ही चीज दिखेगा, आइसबर्ग। क्या बोलते हैं, क्या जाते हैं यार, मैक है उनके पास। साधु केवल सूखे रूखे सूखे कटे फल खाते हैं बस, और कुछ नहीं खाते। एप्पल खाते हैं बस, और कुछ नहीं खाते। साधु लोग दूसरा कुछ, तपस्या करते हैं, एप्पल खाते हैं बस, और कुछ नहीं खाते। यू ओनली सी द टॉप ऑफ द आइसबर्ग, डू यू सी व्हाट हैज गॉन थ्रू। उसके बाद ना कोई भी फैमिली मेरे पास आएगा ना तो मैं कुछ बोलता नहीं, बोलता कैन यू इंट्रोड्यूस मी टू एवरीवन प्लीज, डायरेक्टली ना, पूछने का नहीं है, पत्नी है कि बाप है कि माँ है, कौन कौन है मालूम नहीं अपने को, बोला थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देना भाई, यू नो। एंड देयरफॉर आई फेल्ट, डू वन थिंग ऑलवेज, कल्टिवेट अ ग्रेट attitude. If you have the right attitude, achievements are only going to be an outcome. I don't know if you know this guy, Pablo Picasso, the great artist. One day a lady came up to him, he was on the street, and the lady said, "Hey Picasso, I know that you do great drawings, man. Can you make my portrait?" So he took a small paper, and within 30 seconds he drew a outline pencil sketch of that lady. 30 seconds. And handed over to the lady and said, $30,000 madam. The lady said, Picasso, you made the portrait in pencil sketch in 30 seconds and you are charging $30,000? Picasso said, it took 30 years for me to make the portrait in 30 seconds. The $30,000 is for 30 years of hard work, so that I can make it in 30 seconds. आज आपको लग रहा है मैं इधर आके एक कैसा लेक्चर दे देता हूं, बस इसके पीछे 21 साल की मेहनत है। जो वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं, वो महान कभी नहीं बन सकता। जो घिसने के लिए तैयार नहीं, वो महान कभी नहीं बन सकता। जो इस एटीट्यूड को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं, वो महान कभी नहीं बन सकता। हाउ मेनी ऑफ यू वॉर्न अ सॉक्स, पेयर ऑफ सॉक्स? ऑल ऑफ यू प्रैक्टिकली सब पहनते नहीं सॉक्स। अच्छा, अभी वाला प्रश्न का जवाब पक्का ऑनेस्टली देना। हाउ मेनी ऑफ यू पुट अ पेयर ऑफ सॉक्स विथ होल इन इट? कितने लोगों ने ऐसा सॉक्स पहना है जिसमें छेद है, होल है? हाथ उठाओ, ऑनेस्टली हाथ उठाओ। अगर इधर झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा आपको। ऑनेस्टली हाथ उठा। हाउ मेनी ऑफ यू पुट अ पेयर ऑफ सॉक्स विद अ होल इन इट? मैं भी पहनता हूं, मैं भारतीय हूं। भारतीय लोग कुछ फेंकते नहीं है ऐसा। जब तक पूरा फट फट के सब नहीं जाएगा तब तक हम लोग फेंकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं फेंकेगा। नहीं, आई हैव अ पेयर ऑफ सॉक्स, यू कैन आस्क सागर। आई हैव अ पेयर ऑफ सॉक्स, देयर अदर पेयर आल्सो, देयर अनदर पेयर ऑफ सॉक्स व्हिच हैज होल्स इन इट। होल हो गया है उसमें, 3 साल से यूज कर रहा हूं मैं उसको, एक्सरसाइज के समय करता हूं उसको, फेंका नहीं है अभी तक। यू नो हाउ टू नो एन इंडियन? इंडियन कौन होता है? इंडियन इज अ गाय हु आफ्टर शैम्पू का बॉटल खत्म हो गया ना, उसमें पानी डालेगा, फुर 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 करेगा, एक एक बबल बाहर जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक फेंकेगा नहीं वो कचरे में, उसको इंडियन बोलता है। यू नो हु इज एन इंडियन? इंडियन इज अ गाय, जब टूथपेस्ट खत्म होगा ना, बेलन से पूरा निकलने तक
अच्छा बेलन नहीं इतना एक्सट्रीम होगा, लेकिन बेलन नहीं तो आपने ऐसा तो किया होगा ना, पीछे का वो मोड़ के मोड़ के मोड़ के मोड़ के ऊपर तक आ गया, फिर दबा रहा है, आ ही नहीं रहा है वो बाहर, दबा रहा है, फिर बाथरूम में गया यार टूथपेस्ट खरीदना रह गया अभी, फिर उसको ब्लेड से काट के थोड़ा लगा के कुछ तो कसेगा, फिर फेंकेगा वो। दैट इज इंडियन। हाउ डू यू नो हु एन इंडियन इज? वो टी शर्ट फट गया ना, वो रात में पहनता है उसको। जब रात में पहनने के लायक भी नहीं रहा ना, तो होली के लिए रखता है। होली में कोई कलर वलर फेंकेगा, फटा हुआ रहेगा। अगर वो होली के लिए भी अभी यूज नहीं होगा ना, फिर घर में पोछा मारने के लिए काम आएगा। दैट इज जस्ट अस इंडियंस। एम आई रॉन्ग? टेल मी। ये हम भारतीय है, हम कुछ फेंकते नहीं है। पिछले कई सालों का टूटा हुआ बटन मैंने छोटे कपड़े में रखा है मेरे पास। कहीं टूट गया ना, उतना 50 पैसा नहीं खर्चा करेगा। 50 पैसा है किधर आज, लेकिन मैं 50 पैसे वाले जमाने का हूं मैं। वी डोंट थ्रो इट। सो इफ यू हैव अ होल इन द सॉक्स एंड यू डोंट थ्रो इट बिकॉज यू वैल्यू द मनी यू हैव स्पेंट, इट्स अ ग्रेट एटीट्यूड। इट्स अ ग्रेट एटीट्यूड, which means you will value everything in life. It begins with a small pair of socks, but it leads to an attitude. And then you'll start valuing your teachers, your professors, your parents, your work, the opportunities that you get. Every little thing you'll value and be grateful for. But there are some people who wear that socks with hole in it. You know why? Not because they value it. Because they think जूते के अंदर होल है, देखेगा कौन? जूते के अंदर है तो देखने वाला तो कोई है नहीं। देखने वाला होता तो फिर अच्छा बिना होल वाला सॉक्स पहनना पड़ेगा भाई। अगर जूता उतार के ऐसा पैर सामने करके बैठना है ना, तो नीचे टॉमी हिलफिगर का झंडा होना चाहिए। देखने वाले देखने चाहिए सब लोग मैं क्या पहना हूं। देन द होल मैटर्स। देन यू नो व्हाट दैट गिव्स अस? व्हेन यू थिंक ढका है ना जूते में होल, तो फर्क नहीं पड़ता। यू नो व्हाट दैट गिव्स अस? अ पुअर एटीट्यूड। व्हेन पीपल आर वॉचिंग, देन आई विल डू गुड। When people are not watching, then hole भी चल जाता है। That attitude, such people need supervisors. Such people need monitors. Such people need on top of you a mother, father saying, look, के पाड़। क्यों? Attitude बन गया है वो। जब कोई देख रहा है तो एकदम चकाचक, टकाटक, ढांचिक, झिंचाक, जो भी बोलते हैं, क्या मालूम नहीं क्या, एकदम फर्स्ट क्लास। और जब कोई नहीं देख रहा है, how does it matter? Ladies and gentlemen, there was a guy who was making a sculpture. And a guy entered into that sculptor's workshop and saw the sculpture. He said, man, you're a genius. What incredible work, making a marble statue. Then this guy who had come to visit this workshop started walking around. And he found in a corner the exact same sculpture lying there. So he came and asked the sculptor, sir, you have 2 orders for the same sculpture? उसी मूर्ति के लिए 2 ऑर्डर है आपके पास? बोला नहीं साहब, एक ही ऑर्डर है। तो बोला 2 क्यों बनाया? उधर है ना पड़ा। बोला नहीं, वो फॉल्टी है उसमें, वो फॉल्ट है उसमें। बोला फॉल्ट है? क्या फॉल्ट है? He said, वो नाक पे ना, वो जो आदमी है ना नाक, उसके नाक पे थोड़ा सा खरोच आया है। Then the guy asked the sculptor, where are you going to put this मूर्ति? He said, 20 फीट ऊपर एक पिलर पे, 20 फीट ऊपर हम लोग इस मूर्ति को स्थापित करने वाले। He said, sir, ये मूर्ति अगर 20 फुट ऊपर होगा, ये तो मैं इधर देख रहा हूं इसलिए छोटा सा स्क्रैच दिख रहा है। 20 फीट ऊपर के लिए किसको दिखेगा वो स्क्रैच? द मैन रिप्लाइड, भगवान को दिखेगा और मुझे हमेशा दिखता रहेगा, दुनिया नहीं देखेगी। द वर्ल्ड विल नॉट सी, I will see and I will know and God will know that I did a half-hearted job, a faulty job. Therefore I've kept that as a faulty piece and I'm working on the perfect piece. ये जो एटीट्यूड आ गया ना कि एक छोटी सी खरोच भी हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते अपने काम में, ऐसे लोग महान बनते हैं। चालू काम वाले नहीं, चालू पढ़ाई। तो तेरा नोट्स दे दे यार, तूने लिखा है ना नोट्स, अभी तेरा नोट्स दे दे, एग्जाम आ गया है, अब एग्जाम में नोट्स पढ़ के अपना पास कैसे तो हो जाएगा। ऐसे लोग महान नहीं बनते,
क्योंकि एक एटीट्यूड बन जाता है वो. Therefore, I've always said, work on your attitude. छोटी छोटी चीज. अगर दाढ़ी रखनी है ना लड़कों, trim it. Keep it so that it looks neat and tidy, not that, scrawny kind of thing on the face. Girls, if you want to dress up, be meticulous. It's not about a fashion parade, it's about an attitude. नए जूते नहीं है ना चलेगा, जो है वो साफ होने चाहिए. दुनिया नहीं देख रही है चलेगा, आपका एटीट्यूड बन रहा है. छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देकर ही बड़े लोग बड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी चीजों को करके नहीं. People who have grown big by paying attention to small things only. And I'm not saying it's bad to put a socks with a hole in it, but what's your attitude behind it? Chalu kaam or value? If it's a value, go ahead and use it. Then you wouldn't mind even pulling it out of the shoe and let others see it. एक और सवाल पूछूं आपसे. How many of you have decided to wake up early in the morning? Decided. How many of you snooze? Honest. कितने लोग snooze करते हैं? How many of you snoozed at least once? How many of you snooze minimum twice every day? How many of you snooze 3 times? How many of you after 4 snoozes think, किसने बनाया अलार्म यार, बंद कर इसको, सो जा. One guy was telling the teacher, बोले पढ़ना लिखना छोड़ पढ़ाई, पढ़ना लिखना छोड़ पढ़ाई, नकल पर रख आस. कॉपी. पढ़ना लिखना छोड़ पढ़ाई, नकल पर रख आस, उठा रजाई सो जा बच्चे, रब करेगा पास. ये उसकी कविता है. ये ले कर ले बात. I'll tell you something. अच्छा, एक और चीज पूछो. How many of you have snoozed the alarm? अभी आपको अगर 6 बजे उठना है तो आपने 5:30 का अलार्म लगाया ताकि 4 स्नूज करने मिलेगा, और ऐसा लगता है मैं आधा घंटा ज्यादा सोया. कितने लोगों ने किया ऐसा? सच्चा सच्चा बोलो इधर, है ना? कैन यू इमेजिन? वो आधा घंटा बस ऐसा उल्लू है, आधा घंटा फालतू में बज के बीच में नींद खुल रहा है, तो 6 बजे का लगा के उठो ना. I'll tell you something. It's not about an alarm clock. It's about an attitude. And you know what the attitude is? I don't respect what I decided last night. This is how you begin your day. How does your day start? Your day starts by, I don't respect what I myself decided yesterday night. I decided I'll be up at 6 o'clock, but I got up at 6:30 by snoozing, which means I don't have any determination at all. ऐसा तो दिन शुरू होता है. And therefore I feel, अगर 6 बजे उठा नहीं जाता ना, ठीक है, 6:30 बजे अलार्म लगो, लेकिन जैसे ही बजे ना, बिना स्नूज किए उठो. आपको लगता है स्नूज से क्या फर्क पड़ता है? स्नूज गिव्स राइज टू अ पोस्टपोनिंग एटीट्यूड. आगे ढकेलते हैं. आपको लगता है एक स्नूज है, नहीं, वो स्नूज पढ़ाई में भी स्नूज होता है, वो स्नूज सबमिशन में भी स्नूज होता है, वो स्नूज प्रोजेक्ट में भी स्नूज होता है. जॉब करने लगे तो वो स्नूज आपके जो पेपर सबमिट करने उसके लिए भी स्नूज होगा. एंड देयरफॉर हियर्स माय फर्स्ट मंत्र. स्मॉल थिंग्स make a big difference in your attitude. Don't neglect the small things. You don't grow big by big things. You grow big by small things. Greatness means paying attention to the smallest things in your life. जितना आप, मैं कोई आपके लिए बहुत बड़ी चीज करने नहीं बोल रहा, मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूं बस. छोटी 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 चीजों पर ध्यान दो, उसको लगन से करो, समर्पण करो अपने आप का उन चीजों को. ऐसे समर्पण करो कि वो आपका एटीट्यूड बन जाए. ऐसा एटीट्यूड बन जाए कि फिर जो भी करोगे ना, उसी लगन से, उसी समर्पण से, उसी डेडिकेशन से करते रहोगे. एंड आई विल टेल यू व्हाट इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज टू चेंज दैट एटीट्यूड. अभी आप सबको लग रहा है हाँ करना है मेरे को. कितने लोगों को लग रहा है कि मुझे अभी आज से ऐसा ध्यान देना चाहिए छोटी चीजों पे? करेक्ट. इमीडिएटली यू फील कि सही बात है, करना चाहिए. छोटी छोटी चीज करके ही अपना सही एटीट्यूड होगा. और कोई बहुत बड़ा तो अपने को चेंज नहीं करना, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है, मतलब लगन से करना है. तो बराबर पैरेलल है क्या इसको?
ज्योमेट्री भूल गया मैं। अगर ऐसा रखना है ना तो बराबर 90 डिग्री पे है क्या?